So, how's your preparation completed? Yes, sir. Okay, fine. Ajmal, Faizan, Kashifa, Saurabh, Ikra, Tosif, Zainab. I'm glad to see that most of you people have joined for today's session. Moin, how are you? You were not in touch with me for last 1 week. How is your preparation going? Hi sir, I'm fine. How are you, sir? I'm also good. Chaliye, so I guess most of the students are traveling today. They are not able to attend this session, but no worries. Those all of you who have attended, today's session is going to be very important for you to how you should manage yourself in exam hall. Because most of the time, what happens ki, when you prepare for UPSC exam, obviously, no one is 100% sure that whether the syllabus is covered or not, or whether the preparation is completed or not. So most of the times, what happens ki we always have a kind of anxiety, a kind of nervousness that ki, whether I will be able to qualify this exam or not. But if you keep yourself cool and if you keep your temperament proper in the exam hall, and if you manage yourself in this in that 2 hours of the exam, then obviously it will be more useful because almost obviously whatever we have studied till now, it's the time to execute, and it's time to what we can say execute the knowledge which we have. As I always say, that it's not the lack of knowledge which fails you, but the execution of the knowledge which normally fails the people, right? Is the screen visible to all of you? Can you all see it? Hello, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So just give me a minute. Yes, many people are not able to join. Okay. So, as I always say, that it's not the lack of knowledge that fails you, it lack of execution of knowledge that fails you. Like what happens, ki whatever you study, you have studied a lot, you have studied so many books, you have studied so many concepts, you have studied like current affairs, you have studied NCRTs, you have studied reference books, everything you have studied. But ultimately, we know that in exam hall there are certain questions. Those questions can be solved by what you can say using the knowledge whatever you have. Like it's always remember that in UPSC exam, it's never going to be what you can say the syllabus will never end, the topics are not going to be completed, and no one can be 100% what you can say sure whether his preparation is complete or not. But again, this is a competitive exam. In competitive exam, you have to what you can say have a little edge over the other what you can say the candidates. Like one thing you remember that in UPSC exam, those who qualify and those who do not qualify, and obviously I'm talking about all those serious candidates. Like for example, suppose if you see last year cutoff, can you all see the cutoff? This is very important because most of the students, most of the time, what happens, students are not aware about what is the cutoff for the previous exam, and since they are not aware about what is the cutoff for the previous exam, they are not able to understand how many questions to attempt in the exam hall and how many questions are to be left in the exam hall. So this is the information about the cutoff mark for the previous year. Can you all see? Now here what happens, you need to remember that how many questions you have to attempt, that you can be able to gauge out by knowing what is previous year what you can say the cutoff. Now as I always say that prelims exam is all about mind game. UPSC is just trying to find out whether you have the basic knowledge or not. They are not going to check the in-depth analysis, or they are not going to check in-depth knowledge about that particular thing. They are trying to find out whether you have the basic information or not. As in the last 2 months, we all of you have checked that how the UPSC is framing the questions, what type of questions are being framed. Like there are some statement based questions, there are some match the pair question, there are some direct questions, like कुछ direct question होते हैं. तो in exam you need to remember कि कौन सा question attempt करना है और कौन सा question attempt नहीं करना है. So it's very important that always try to understand कि whenever you see a question, whenever you see a question, in that particular question, what UPSC is trying to find out from you, or what UPSC is trying to understand from you in that particular question, that you need to understand. And how we can understand it? By reading the questions and by what you can say finding out the trigger word in the question. Like as we have discussed so many questions of the UPSC, and we have seen in every question, whether it is in question or whether it is in option,
there are certain trigger words. There are trigger words means what, कि कुछ क्वेश्चन में कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रीम नंबर होता है, या फिर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So prelims exam is all about mind game. UPSC is asking some question to you. It is asking some psychological questions. It is trying to find out that whether you are trying to understand that intention behind that question or not. That is very important. So try to find out what is expected in question. That's very, very important while solving one question. Second, try to find out likely mistake in statement. Like in statement based question, there are 2 or 3 types of statement based questions in UPSC. One is that 2 statement based question. Statement 1, statement 2, and which of the statement is correct. So we have already discussed in 2 statement based questions, most of the time one statement is wrong. So which statement is wrong, that we need to find out, and most sometimes neither 1 nor 2 is what we can say, the answer should be there. So try to find out what could be the likely mistake in statement. As I always told you, the likely mistakes are maybe probably in numbers, it may be in a ministry, or it may be giving some like extreme statement like all, everyone, like anyone, then what you can say, only, such type of what you can say the words are mentioned there. So try to find out such type of trigger words and gauge the answer, and don't attempt trap questions. Remember, UPSC always have a tendency, what you can say, asking around like 10 to 15 questions, which is not as per the what you can say the previous trend, right? You know, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो यूपीएससी का, तो उसमें में एक 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं कि उस तरीके के सवाल यूपीएससी ने कभी पहले नहीं पूछे हुए होते हैं. तो उस समय वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्या करना है, यू डोंट, अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो सर्टेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है. एंड रिमेंबर कि जो नए टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा था, 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था, और 2017 का भी क्वेश्चन पेपर हमने डिटेल में देखा है. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप है कि जो जिस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले नहीं पूछा था, जैसा न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन unless and until you are 100% sure, do not attempt that question. And remember, अगर आपको नहीं आ रहा है, it's very important that confidence you should have. As I always say, कि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो believe that कि that question cannot be answered by anyone else, because that question is new for everyone who is seriously preparing the question. Because आपने पिछले 5-6 महीने में जितना भी प्रिपरेशन किया है, whatever basic material आपको पढ़ना चाहिए तो आपने पढ़ा है, जितना भी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना था आपने किया है. उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, इट्स कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि वो किसी और ने भी नहीं पढ़ा होगा और किसी और को भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. तो ये एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस है, ये जो, दैट्स आई ऑलवेज टॉक अबाउट कीपिंग योर टेम्परामेंट कूल इन द एग्जाम. सो व्हाट इज दैट कीपिंग योर टेम्परामेंट कूल मींस व्हाट, कि अगर जो भी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी वेरी क्लियर कि वेदर आई एम गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और आई एम नॉट गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर मुझे आंसर नहीं आ रहा है, इट्स बेटर टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक इन एग्जाम. नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बार एक प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर व्हाट यू कैन से सॉल्विंग सम क्वेश्चन, तो शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन के बाद में ही डिसाइड होता है कि वेदर आप यू आर गोइंग टू कीप योर टेम्परामेंट कूल इन एग्जाम और नॉट, और वेदर यू आर गोइंग टू गेट पैनिक. शुरुआत के अगर सपोज 4-5 क्वेश्चन है, या फिर मे बी लाइक 10 क्वेश्चंस or 15 questions, if question paper, if you feel that questions are difficult, don't get panic, because you know, out of 100 questions, 20 questions are going to be difficult and they are going to be very difficult. No one is going to get the answer of those questions. तो हो सकता है कि आपके सीरीज में, लाइक यू नो, यूपीएससी में अलग अलग सीरीज होते हैं, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज. तो हो सकता है कि आपको जो सीरीज मिला है उसमें ही शुरुआत में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हों. सो डोंट गेट पैनिक इफ देयर आर एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द बिगनिंग. और सपोज अगर शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, देन आल्सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. तो ये एग्जाम में होता है. कभी कभार क्या होता है कि शुरुआत में के क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट आए तो यू गेट पैनिक, और व्हेन यू गेट पैनिक देयर इज समथिंग कॉल्ड एक एड्रेनालिन हाई होता है, एंड दैट हाई एड्रेनालिन will lead to what you can say कि आपका वो आपका जो ब्रेन है वो काम करने की जो कैपेसिटी उसको कम करता है. जब अपना ब्रेन काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में निकलते हैं. तो अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आए, डोंट गेट पैनिक. रिमेंबर दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, 40 टू अराउंड 50 क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो वो बाद में वो क्वेश्चन इजी आने वाले हैं. सो डोंट गेट पैनिक.
इन केस ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और शुरुआत में भी अगर इजी क्वेश्चन आए, हो सकता है कि जो भी आपने पढ़ा है जिस तरीके से मैंने बताया वैसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आए हैं, आपके आंसर निकल रहे हैं, तो उसमें भी एक्साइटमेंट में भी एड्रेनालिन हाई होता है. एड्रेनालिन बिकम्स हाई इन टू केसेस. One is that when you become too much happy or too much excited, and second when you become too much what you can say panic or when you get too much depressed. तो ये दोनों सिचुएशन नहीं आनी देनी है एग्जाम में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट? तो प्लीज कीप योरसेल्फ कूल थ्रूआउट द like till the last question of the what you can say the exam. And remember कि खास करके पेपर 1 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर 1 में और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी डिफरेंस है. पेपर 1 में व्हेन यू डू द एग्जाम, जिसका भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हुआ है, जैसे मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड व्हिच क्वेश्चन हैव टू बी स्किप्ड. सो ऑलमोस्ट लाइक विद इन 1 hour 15 minutes और लाइक 1.5 hour, लाइक 1.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन तक चले जाते हैं और बाकी का आधा घंटा बचता है. पेपर 2 में दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि यू कैन इजीली फिनिश द पेपर 1 बाय फॉलोइंग माय ट्रिक्स व्हिच आई ऑलवेज. मैंने आपको जो ट्रिक्स बताए थे कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, इसके बारे में जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताया, अगर उसको अगर आप फॉलो करोगे तो 1.5 घंटे में पूरा पेपर खत्म हो जाता है. द रियल चैलेंज इज इन दैट लास्ट हाफ एन आवर, बिकॉज इन दैट लास्ट हाफ एन आवर व्हाट हैपेंस, in last half an hour you try to attend more questions, like you try to attend more questions and there you make mistake. बिकॉज क्या होता है कि लास्ट में अगर सपोज अगर आपने अराउंड 60 to 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बाद का आधा घंटा बाकी है, तो उस आधे घंटे में आप कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, और वो जो आपके लास्ट के आधे घंटे में आप जो हरी में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है. तो व्हाट यू शुड डू इन लास्ट हाफ एन आवर, लाइक पहले 1.5 hour में आपको क्या करना है? इन फर्स्ट 1.5 hour you will solve all sure questions. Sure means what? Sure shot that you know the answer of this question. And again जो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताए थे कि how to find out the likely mistakes, उस तरीके को फॉलो करने के बाद में सपोज अगर आपके 65 to 70 अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, देन उसके बाद आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं. लेकिन अगर सपोज आपके अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं, दैट इज योर अटेम्प्ट आर अराउंड ओनली 40 या फिर ओनली अराउंड 45 और 50, then you should try few more questions. If your attempt is more than 65 or around 70, then you shouldn't go for next level. तो बाकी आधे घंटे में आपको क्या करना है? In that half an hour, what you will do, you will try to find out the difficulty level of the question, right? So can anybody tell me how can you understand whether the question paper is difficult or whether the question paper is easy? An idea how to gauge in the exam, because it's very important, because on the basis of the difficulty level only you can decide how many questions to be attempted. Many people ask me question, sir, how many questions to be attempted, right? So how you can come to know that what is the difficulty level of the question, because depending upon the difficulty level you can increase your attempt or you can decrease your attempt. अब मुझे बताइए कि अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको कम अटेम्प्ट करना चाहिए? What should be your what you can say the approach, whether you should attempt more questions or you should attempt less questions if difficulty level is high? Less Sir, questions. I think we should attempt less questions. You should attempt less questions. Then how can you gauge in exam the difficulty level? And that's very important. Like एक तो पहले आपका 1-1.5 घंटे के बाद में जब पहले राउंड में आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो उसके बाद में हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, या हो सकता है सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो, लाइक श्योर वाले जो क्वेश्चन है उसमें. तो उसके बाद how can you like decide whether you should go for what you can say to attempt more questions or you should stop there only? Yes, Gitanji. Hello, am I audible to you? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, close options make the questions difficult. When two options are very close, 2 or 3 options are very close. No, I'm not talking about one particular question. I'm talking about overall. Overall जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, उसको कैसे डिसाइड करोगे कि whether that question paper is easy or difficult? How can you decide that? On basis of previous year question papers. So how? On the basis of previous question The paper, how? depth of yes. तो कंपैरिजन कर लेंगे ना. देखिए कैसे, like I always remember UPSC every year UPSC make some changes in the trend of asking the question. Every year it happens. Out of 100 questions,
like around 10 to 15 questions they ask from a new trend or new type of questions वो पूछते हैं. हमने 2018 का और 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था. We have seen 2018 and 2019 क्वेश्चन पेपर. Even we have seen 2017 क्वेश्चन पेपर. 2019 का भी क्वेश्चन पेपर हमने देखा था. If the questions are सिमिलर टाइप अगर क्वेश्चन है, जैसे 2019 में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके के क्वेश्चन अगर 2020 में क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन ऑब्वियसली क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, बट द पैटर्न एंड टोन ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस इफ इट इज सेम, it means that the question paper is easy. Is it clear? If the question paper, if the questions are completely, अगर drastic change है उसमें, drastic change मतलब क्या कि areas of the areas of the question, हमने पहले देखा था कि कौन सी एरिया पे यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी में पूछता है, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया में कौन सी एरिया पे क्वेश्चन पूछता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और वही हमने रिवीजन में किया था. Suppose if there is a drastic change in areas on which UPSC asking the question, it means the question paper will be difficult, because जो भी जितने भी जो यूपीएससी के जो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके उसके हिसाब से रिवीजन करते हैं. अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में जाने के बाद में अगर कुछ क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड के हिसाब से अगर क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है, इट मींस दैट द क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट. And again, suppose out of 100 questions, 20 are what you can say the new trend, and 80 are on the mean, or like on the like it is same like the previous year question paper. It means that the question paper is moderate. If all the questions are same like the previous year, and only around 4 to 5 questions are like the new type of questions or new areas on which the question, it means question paper is easy. But agar questions like suppose it 50 questions, like around 40 to 50 questions are completely new tone of the questions, framing जो type है ना, जो framing में हमने देखा है कि one statement, two statement, match the pair में हमने देखा है. तो अगर कुछ नए टाइप का अगर क्वेश्चन उन्होंने अगर पूछा है और टॉपिक और एरियाज अगर वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा. और if there is a drastic change in the pattern and tone of asking the question, it means the question paper is difficult. Then you should what you can say attempt only those questions as per the previous year trend, जो नए ट्रेंड के हिसाब से, नए एरिया के हिसाब से या नए टोन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस को आपको तब तक अटेम्प्ट नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर ना हो. तो इफ द डिफिकल्टी लेवल इज वेरी हाई, then your attempt should not be more than, in any case, like it should not be more than what you can say 60, and in any case your attempt should not be less than 50. Got it? So question paper, how many questions to be attempted? I will always say, because last year का अगर आप कट ऑफ अगर देखोगे, again it's very important depending upon your category also. My category also plays a very important role in deciding how many questions you need to be attempted. Can you all see the cutoff marks? So general category cutoff was 98 last year. So it means what? If you get 49 correct answers after deducting your negative answer, then you got qualified last year. Last year का जो 98 था, अगर suppose last year के हिसाब से अगर क्वेश्चन पेपर वैसे ही है, तो इस साल हो सकता है क्वेश्चन like the cutoff will be around 105 to 10. Remember, if the question paper is same like previous year, then cutoff will be higher. If the question paper is not same like the last year, then cutoff will be low. If question paper will be very difficult, अगर बहुत ही ज्यादा difficult है तो cutoff will be around what you can say 95 to 90. तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ट्रेंड चेक करना है. And if questions are same, then you will decide. So general category cutoff was 98, EWS was 90, OBC was 95. So you can see general and OBC there is no much difference, but yes, those who are in EWS category, if you got around 45 correct answers in the last year, you got have qualified. SC 82, last year cutoff was around I guess 84 for SC, but yes, cutoff was reduced. ST 77. PWD ये physically handicap category हैं, their cutoff is also mentioned here. That sorry. So you can check your what I can say respective category, and according to the respective category, you should decide how many questions to be attempted in exam. So you have to take a decision. Like as I always tell you, UPSC is looking for decision makers, and what the decision maker? Decision that you have. Mohammed Uzair, just give me 2 more minutes. I will come to you. I am going to take question and answer from you. Just let me finish this, then I'll come to you. So UPSC is looking for decision maker. Decision maker means what?
how many questions you should attempt in exam, that decision you have to take in exam, and that you can or you should take by gauging the difficulty level in the exam, and you have to predict also. अब दूसरी चीज और एक आपको ये करना है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया 1.5 घंटे के बाद में, तो उस आधे घंटे में क्या करना है, आधे घंटे में आप क्या करोगे कि श्योर वाले आपके कितने क्वेश्चन है उसको आप काउंट करोगे, लिटरली यू विल काउंट that how many correct answer you have got, like sure correct answer you have got in exam hall. If you have got around 50 to 55 sure correct answer, suppose आपने 65 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से श्योर अगर आपके 50 है, श्योर 50 है, और 15 क्वेश्चन जो है बाकी के उसमें यू आर नॉट श्योर, हो सकता है ये भी सही हो या वो भी श्योर है, देन यू शुड अटेम्प्ट ओनली 5 मोर क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके श्योर वाले अगर 40 के आसपास आते हैं, if your sure answer are around only 40 or 45, then you should go for what you can say 10 more questions. So whether you should attempt more questions or not, whether you should go for more questions or not, that you will decide in exam by counting your accurate or sure answers in exam. Is it clear? So this is all about for the paper 1. If you want to ask any questions related to the just whatever I have explained this to you, you can ask me. Then we will discuss about it. Yes, someone has raised their hand. Mohammed Uzair, right? Yes, Uzair. You want to ask something? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए उजैर। सर एटलीस्ट सर कितने कम से कम करना सर अटेम्प्ट सर? मिनिमम मैं बताऊंगा, At least, अगर जी, क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है, डिफिकल्ट मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में जब अलग ही क्वेश्चन आए हैं, कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज इन द पैटर्न एंड टोन ऑफ द एग्जाम, then minimum आपको 50 to 55 अटेम्प्ट करने minimum. In any case you shouldn't attempt less than 55, and in any case you shouldn't attempt more than 80 or 85. कितना भी अगर इजी क्वेश्चन पेपर हो, आपको 85 क्रॉस नहीं करना है। अगर आप 85 क्रॉस करोगे इसका मतलब है आपका नेगेटिव ज्यादा होगा। एक चीज ध्यान में रखिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट यू कैन से नॉट टू गेट मोर नेगेटिव आंसर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट disqualify in the exam because of the negative answers which they have attempted and not because the positive or the what you can say the correct answers which they have attempted. तो prelims exam में ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि कम से कम हमारे wrong कैसे हो, कम से कम नेगेटिव कैसे हो, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप पहले राउंड में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो यू शुड अटेम्प्ट ओनली 100% श्योर क्वेश्चन। अगर 100% श्योर अगर आपके अराउंड 60 to 65 होते हैं तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका 100% श्योर अराउंड 40 है, देन यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट मोर 50 और मोर 15 और मोर व्हाट यू कैन से 20 क्वेश्चंस, सो दैट यू शुड कम अराउंड व्हाट यू कैन से 100 क्वेश्चंस। एज आई टोल्ड यू, यहाँ मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर कट ऑफ इट इज अराउंड लाइक ओपन कैटेगरी इज अराउंड 100, ईडब्ल्यूएस इज अराउंड 90, ओबीसी इज अराउंड 95। सो अगर इजी है तो 10 प्लस होगा, अगर डिफिकल्ट है तो 5 कम होंगे। तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि how many questions needs to be attempted and how many questions need not to be attempted. Is it clear to all of you? Anyone else? Anyone else wants to ask about this? Because this is very important. How many questions to be attempted? Two things you need to remember. One is you should decide this on the. Ajmal, I'm not getting your voice clearly, so just wait for a minute. So you should be able to decide it in exam hall on the basis of the difficulty level of the exam. Yes, Asmal, can you please repeat it again? I was not getting your voice properly. Just said. Yes, बोलिए Asmal. I did not get your question properly because your voice was not clear. No, sir, everything was clear. Just said everything was clear. Okay, good. Yes, Rashida, you want to ask something? यस सर, मैं ये जानना बोलिए। हेलो Yes, sir. सर, जैसे स्कोरिंग कम हो रही हो, जैसे 45 के आसपास अगर गए और जो आप बता रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, तो सर कोई ऐसी ट्रिक जो आप बताएंगे, क्योंकि आपने साइंस एंड टेक में भी बताया था, इन्वायरमेंट में भी बताया था, और अदर्स कुछ ऐसा जिससे अगर बहुत ज्यादा पेपर हार्ड लग रहा हो तो कुछ ऐसा जिससे स्कोरिंग इतनी हो जाए कि क्लियर हो जाए? नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको जो 15 से 20 क्वेश्चन जो ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं वो वैसे ही अटेम्प्ट करने जैसे मैंने ट्रिक्स बताए।
और जो मैंने रूल ऑफ थंब आपको मैंने बताया, बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग रिसेंटली, तो बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको बताऊं वट एवर ट्रिक्स आई हैव टोल्ड यू, अब वो आपको फॉलो करना ही है, और उसको फॉलो करके एटलीस्ट 65 to 70 के आसपास आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एंड बिलीव एंड ट्रस्ट इन माय स्ट्रेटेजी एंड ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो ट्रस्ट होता है ना कि ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा तो शायद हो सकता है कि आई मे गेट इट रॉन्ग, डू नॉट गेट डू नॉट हैव अ what you can say a 0.1% doubt in the strategy which you are following, and जो भी मैंने आपको बताया इट इज अ प्रूवन स्ट्रेटेजी, मैंने प्रीवियस ईयर भी इसको फॉलो किया था, जिन स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया है दे गॉट क्वालिफाइड इन प्रीवियस एग्जाम। सो ये जो होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे ना वो जो कॉन्फिडेंस जो होता है या फिर जो ट्रस्ट होता है हमारे स्ट्रेटेजी में, वो लूज नहीं होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, कुछ टिप्स मैंने आपको बताए थे सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ। पॉलिटी में मैक्सिमम जो चांसेस हैं रॉन्ग होने के वो पॉलिटी में ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक आप अटेंड मत कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिकॉज क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट का आप ज्यादा पढ़ाई करते हो उसमें ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। सेकंड चीज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन याद है ना कि एक स्टेटमेंट होता है और देयर आर ओनली ए बी सी डी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में जब तक आप 100% श्योर ना हो तब तक अटेम्प्ट नहीं करना है। You should try your luck only in statement based question and not in direct question. सबको पता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या, ऑल ऑफ यू नो दैट। You never try your luck in direct question, only try your luck only in statement based question and not in what you can say the factual question. Is it clear? और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बताया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो 1 2 3 वाले क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, या फिर जो डिफरेंसेस होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएलटी एंड एलटी, इस तरीके के क्वेश्चन में ट्राई टू फाइंड आउट द लाइकली मिस्टेक्स, ये मैंने आपको बताया था। गवर्नमेंट स्कीम्स में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्ट्री रॉन्ग करते हैं, नंबर्स रॉन्ग होता है, फैक्ट रॉन्ग होता है, इसको फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूटीओ अगर ऑप्शंस में है तो डब्ल्यूटीओ मार्क करना है, यूरोपियन यूनियन अगर ऑप्शन में है तो यूरोपियन यूनियन मार्क करना है। और मैंने कुछ वर्ल्ड मैप में कुछ मैंने आपको एरियाज बताए थे, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताए थे। लास्ट टाइम करने के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, कल का एक दिन आप प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? एम ऑडिबल? Yes. यस सर आप थोड़ा Yes. स्लो बोलिए, बहुत आपकी तो क्लियर नहीं हो पाया। ओके, सो मैंने आपको कुछ एरियाज बताए थे, जैसे कि मैंने इंडेक्सेस आपको बताए थे जो चेक करना है। मैंने मैप रीडिंग के लिए आपको बताया था कि वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया देखना है, सेंट्रल एशिया देखना है, वो आपको कल करना है। और उसके अलावा आपको जो अभी लास्ट है मतलब कल क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि हो सकता है जितना पॉसिबल है उतना 2019 का क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो। ट्राई टू व्हाट यू कैन से हैव अ फील ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन। यूपीएससी क्वेश्चन का फील क्या होता है ना कि एग्जाम में जाने के बाद में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब ज्यादा डिफरेंस होता है तो उससे एग्जाम हॉल में जाने के बाद में कंप्लीटली जब नया क्वेश्चन पेपर आता है तो आप यू गेट व्हाट यू कैन से फंबल्ड। तो जितना आप 2019 का क्वेश्चन पेपर जितना आप देखोगे और एग्जाम हॉल में जाने के बाद में बिलीव मी कि आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन डिफरेंट है बट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सेम ही है, तो उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी, एनवायरनमेंट की कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताए थे, साइंस एंड टेक की कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताए थे, देन करंट अफेयर्स की कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताए थे, नंबर्स ओनली ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको देखना है। एलिमिनेशन याद है मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्टेटमेंट है, अगर वो सपोज वन ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में वो स्टेटमेंट है तो वो हमेशा गलत होता रहता है। इज इट क्लियर? Okay, it's better to directly talk with me because I am not able to read the chart while I'm talking. सर आपके यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपकी वॉइस प्रॉपर्ली आ ही नहीं रही है। Okay, one second. Let me switch my network and try to find out to have a proper network. Okay. Yes, someone was asking someone. Yes, sir, can you tell me the difference between direct and statement-based questions? Amir Aziz, आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देखिए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल which among the following manages the or links the ATM, फिर ऑप्शंस होते हैं
Security Depository Limited, RBI, Bank Association and NCPs, or you can say Payment Corporation of India Limited. और कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है. मुझे लगता है आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं. यस काशिफा सर, शुड वी स्टार्ट filling the bubble in the beginning or in the yes? Very good question काशिफा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में 10 क्वेश्चन होने के बाद में क्या करते हैं कि मार्क करते हैं. ये नहीं करना है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, व्हेन यू ट्राई टू कैन से मार्क योर आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने उस समय में डिसाइड किया कि दिस शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन, एट दैट मोमेंट ओनली यू शुड मार्क योर क्वेश्चन. ऐसा नहीं करना है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि पहले 10 सवालों के आंसर निकालते हैं, फिर उसको क्वेश्चन पेपर में मार्क करते हैं, फिर आंसर शीट में मार्क करते हैं. ऐसे नहीं करना है. आपने क्वेश्चन पढ़ा, अपने आंसर निकाला, इफ यू आर वेरी श्योर कि दिस इज आंसर, यू विल मार्क द क्वेश्चन आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली. और ध्यान में रखिए कि जब भी आप मार्क करें तो बिफोर मार्किंग मेक श्योर कि यू आर मार्किंग अगेंस्ट द राइट क्वेश्चन नंबर, because most of the time क्या होता है कि you get correct answer but you mark it against the wrong, what you can say, question number. ये ऐसे होता है because in between आप कुछ क्वेश्चन स्किप करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 41 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, फिर 42 43 क्वेश्चन आपने स्किप किया और आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. तो जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उस समय में आप मेक श्योर करोगे कि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 44 ही है और क्वेश्चन नंबर 44 का ही आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ. ये एग्जाम में बहुत ध्यान से करना होता है. प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली 2-3 साल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होने की वजह से लोगों को आदत नहीं होती है ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट को मार्क करने की. तो ये अगर किसी ने ऐसे प्रैक्टिस नहीं की है ऑफलाइन ओएमआर शीट मार्क करना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर मार्किंग अगेंस्ट द राइट, व्हाट यू कैन से, द Am I audible to all of you? Hello? Hello? Am I audible to all of you? Hello? Hello? Am I audible? Hello? Am I audible to you now? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए. Yes, sir. Okay, so I was saying कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काशिफ, यू आर आस्किंग मी, आप जब भी कोई क्वेश्चन के बारे में डिसाइड करोगे कि ये आंसर है, तो उसी समय में वो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, मतलब उसको मार्क करना है. यू विल नॉट, ऐसे नहीं करोगे कि 10 क्वेश्चन करोगे फिर मार्क करोगे, फिर अगले 10 क्वेश्चन करोगे मार्क करोगे, ऐसा नहीं करना है. उस क्वेश्चन का आंसर उसी समय में मार्क करना है. इज इट क्लियर? ठीक. After how many questions UPSC change subject of questions, because if I fail to Muhammad Uzair, I didn't get your question. Can you please speak out, because I didn't get what you are exactly trying to ask. सर ये यूपीएससी कितने क्वेश्चंस के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज करता? समझो आप पॉलिटी के चल रहे थे, क्वेश्चन एक 10 क्वेश्चन पॉलिटी के दिया, उसके बाद फिर इकोनॉमी के दिया, वैसा कितने क्वेश्चंस के बाद सर वो ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा यूपीएससी में कुछ नहीं होता है. यूपीएससी में हो सकता है पहले के 2-3 क्वेश्चंस पॉलिटी के हो, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक्स हो, अगेन आफ्टर 4-5 क्वेश्चंस अगेन पॉलिटी क्वेश्चंस में रिकर देयर. सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर पैटर्न कि पहले 15 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, फिर बाद में हिस्ट्री के होंगे, फिर ज्योग्राफी के होंगे, ऐसा नहीं होता है. तो दे कीप चेंजिंग द क्वेश्चन बिकॉज देयर आर वेरियस सीरीज लाइक सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे होते हैं. तो ऐसा कुछ होता नहीं हुआ. देयर इज नो एनी सच पर्टिकुलर पैटर्न इन यूपीएससी एग्जाम. फाइन. एनी डाउट्स? जी सर, थैंक यू. Okay. पेपर 1 के बारे में और भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज़ आई हैव लेफ्ट विद ओनली 2-3 minutes. I will end the session here and I will talk about paper 2, what you should do paper 2 that I will take after ending this session, and I will start a new session once again. You have to join once again. Any doubts about paper 1?
आप पूछ लीजिए, बिकॉज मुझे पता सर, नहीं कि मुझे हेलो नहीं पता कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। यस सर, इकोनॉमिक्स की जो आपने ट्रिक बताई थी WTO वाली, वो आप फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, तो क्या वो होता मैं है कि भूल गई हाँ हूँ। एकदम, अगर एग्जाम में ऑप्शन में अगर WTO है और अगर एग्जाम में यूरोपियन यूनियन है और अगर आपको आंसर नहीं पता, सपोज आपके अटेम्प्ट कम हो चुके हैं, तो आप यूरोपियन यूनियन और WTO अगर ऑप्शन में आता है तो उसको मार्क करना है। ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे इससे पहले। ठीक है नवीन, हाउ इज योर प्रिपरेशन? यू वर नॉट इन टच फॉर लास्ट 2 weeks, नवीन, so hope your preparation is complete. Am I audible to you, Navin? Yes, sir. It was good, sir. ठीक है, चलिए साद, यू वांट टू डू एनी इनपुट्स बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन, तो आपने पिछले साल का भी एग्जाम दिया था, सो यू वांट टू टेल समथिंग टू अदर स्टूडेंट के नॉर्मली क्या मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, व्हाट नॉर्मल मिस्टेक्स वी मेक। एक तो सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना एक सबसे कॉमन मिस्टेक है, और दूसरी चीज होती है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। और तीसरी चीज ऐसे होती है कि इन एनी केस डू नॉट गेट पैनिक इन एग्जाम, और ध्यान में रखिए कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा भी यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है अगर उसने एग्जाम में टेम्परामेंट कूल रखकर जितने श्योर आंसर उतने अटेम्प्ट करेगा। नॉर्मली यू विल गेट अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस आंसर इफ यू यूज योर लॉजिक एंड कॉमन सेंस, and that's very important. Fine. Yes sir, you want to say something? No, sir. No, sir. ठीक है, चलिए, so we'll stop it here now. Just take a 5 minutes break or maybe like 2-3 minutes break. I will start again for paper 2, what you should do for paper 2. Fine. Okay, sir. Okay. चलिए।